जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पार्ट 1 का चैप्टर, जिसे हम मॉडर्न प्रोज हीरोज़ एंड सेकेंड ईयर इंग्लिश कहते हैं। तो उसमें लेसन 10 की अगर हम बात करें तो वो है ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, जिसे लिखा है फिलिप के हिटी ने। इसमें वो आपको बता रहा है कि किस तरह से अब्दुर्रहमान अव्वल ने ड्रामेटिक एस्केप किया था और अपनी जान बचाई थी इन तमाम अपने दुश्मनों से, और भागकर अपने मैटरनल अंकल के पास जाकर स्टे करने लग गया था। तो आइए इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं और इसके जो नोट्स हैं, जिन्हें आप वर्ड्स एक्सप्लेन्ड कहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे सिक्योर हो सकता है और हमारे 12 मार्क्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो किस तरह सिक्योर हो सकते हैं। चैप्टर है हमारा बहुत शॉर्ट और आपकी चाहिए हैं हमें कुछ मिनट्स, वो भी कंसंट्रेशन के लिए। अगर आप कंसंट्रेशन करेंगे थोड़ी सी तो उसमें ये होगा कि हम आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और उससे आपके मैक्सिमम 16 मार्क्स सिक्योर होते हैं। और अगर इस चीज़ों को अगर आप लिखना भी शुरू कर दें साथ साथ तो ये आपके लिए और आसान हो जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स एंड वर्ड्स एक्सप्लेन। एक्सट्रीमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल। नर्व का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ फेसिंग डेंजर वेल। इक्विलाइन कहते हैं लाइक एन ईगल हुग्ड नोज। हीड तो बहुत पुराना लफ्ज़ है जिसको आप तवज्जो कहते हैं, गिविंग अटेंशन टू। उसके बाद रेफ्यूज, रेफ्यूज कहते हैं प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और ट्रबल। उसके बाद असैसिनेशन, जिसे आप कहते हैं हमला, पुटिंग टू डेथ वायलेंटली। कॉन्टेस्ट सबको मालूम है, इसे हम कहते हैं डिस्प्यूट विद आर्म्स, मुकाबला करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है मेक पोजीशन स्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे वर्ड्स मीनिंग या वर्ड्स एक्सप्लेन की बात करें तो हमारे सामने एक्वीडक्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैट्रिक क्लास के चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था। एक्सोटिक, कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, या इसको इम्पोर्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं हेयर या लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स। ट्रांसफॉर्म, चेंज, मेक, क्रिएट चेंजेस इन। इनिशिएट, किसी चीज़ का कदम उठाना, न्यू चीज़ को थिंक अबाउट करना, न्यू चीज़ को सोचना, तो दैट इज़ समथिंग इनिशिएट। गेट स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस। न्यूक्लियस कहते हैं मिडल को। एक्जीक्वेट, एक्जीक्वेट डिग आउट को कहते हैं। गेट ओल्ड बिल्डिंग्स फ्री फ्रॉम द अर्थ कवरिंग इट। सेगेसिटी, विजडम को कहते हैं। प्रोक्लेमिनेशन 9th क्लास का वर्ड है। पब्लिक अनाउंसमेंट। पेनिट्रेट, जाहिर सी बात है किसी चीज़ से बुखला सा जाना। पास थ्रू, हियर इट मीन्स रिच, रीच। थ्राइव कहते हैं डू वेल, क्विक एंड ग्रोथ, प्रॉस्पर। इम्बोस, मेक पिक्चर्स ऑफ और ऑन इन रिलीव। वेलेंशिया, अ प्रोविंस ऑफ ईस्ट स्पेन। प्रोवर्बियल, हेयर या वेल नोन को भी आप कह सकते हैं प्रोवर्बियल। लेट्स टॉक अबाउट द पेज 43। सो हियर इज द पेज 43। इसमें हम एम्फी थिएटर पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं सर्कुलर बिल्डिंग विद सीट्स राइजिंग बिहाइंड एंड अबव ईच अदर राउंड एंड सेंट्रल ओपन स्पेस। नॉटिकल, ऑफ शिप्स या सीमैन को कहेंगे। एवरेज, हेयर इट हैज़ बीन used in the sense of duty upon goods. And the next word is average. Average कहते हैं here it has been used in the sense of duty upon goods. Al-Azhar, a university of Cairo in Egypt. Endowment, ये आपके ICOM के word का word है. Act of giving property producing regular income especially to organization. Magnitude, size, degree of being important.
मैनूस्क्रिप्ट्स, मैनूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है बुक्स रिटन बाय हैंड नॉट प्रिंटेड। अफगानी कहते हैं अ बुक ऑन म्यूजिक को। रूडिमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट स्टेप्स और स्टेजेस इन सम ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो ये थे जी आपके वर्ड्स एक्सप्लेन्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, और क्वेश्चन आंसर से पहले हम पढ़ेंगे इनके उर्दू में मीनिंग्स। तो क्यों ना पहले हम उर्दू में मीनिंग्स इसके देख लें जल्दी से। तो ये रहे जी आपके उर्दू टू इंग्लिश मीनिंग्स। अगर आप इंग्लिश से उर्दू मीनिंग्स करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, जिससे आपके मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपके क्वेश्चन आंसर्स में। और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड मीनिंग्स। एक्सटर्मिनेशन को कहते हैं खात्मा करना, इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं। नर्व कहते हैं एसाब दलेरी को, क्वालिटी ऑफ फेसिंग डेंजर, वेल ब्रेवरी करेज। इक्विलाइन को कहते हैं शाहीन की तरह तेज तीखे नकूस, लाइक एन ईगल हुग्ड नोज, रोमन नोज। उसके बाद है हीड, हीड कहते हैं तवज्जो देना या कान धरना, गिव अटेंशन टू, कंसीडर, नोट या ऑब्जर्व। रेफ्यूज को कहते हैं जी तहफ़्फ़ुज़ या पनाहगाह, प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, सिक्योरिटी। असैसिनेशन अभी आपको बताया है कत्ल या सियासी कत्ल कहते हैं, पुटिंग टू डेथ वायलेंटली, मर्डर करना, किलिंग करना। कॉन्टेस्ट मुकाबला करना, मुखालफत करना। डिस्प्यूट विद आर्म्स, चैलेंज, डिस्प्यूट। कंसोलिडेट इस्तहकाम देना, पुख्ता करना। मेक पोजीशन स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर। एक्विडक्ट आब रेज या ज़ेरे ज़मीन नहर को कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्जॉटिक जैसे कि मैंने कहा था इंपोर्ट करना, गैर मुल्की को कहते हैं कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, फॉरेन इम्पोर्टेड। मैंने आपको इम्पोर्टेड क्लियर किया था, सो यस नाउ इट इज़ क्लियर। फॉरेस्ट घना झुंड, हेयर लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स। ट्रांसफॉर्म तब्दील करना, चेंज, मेक ग्रेट चेंजेस इन, आल्टर, इनिशिएट बिना रखना, बुनियाद डालना। गेट स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, इंस्टीट्यूट, बिगिन या लॉन्च। न्यूक्लियस मरकज़ या दिल, मिडल, सेंटर, हार्ट, फोकस या पाइवट। एग्जैक्टिवेट खुदाई करना, डिग आउट, गेट ओल्ड बिल्डिंग्स, फ्री फ्रॉम अर्थ कवरिंग इट। सैगिसिटी कहते हैं जी हिकमत या दानिशमंदी, दनाई को। विजडम, गुड सेंस, इनसाइट, प्रूडेंस। प्रोक्लेमेशन कहते हैं जी ऐलान, मनादी, मेकिंग पब्लिक, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन। पेनिट्रेट तक जा पहुंचा, पास थ्रू, हियर इट मीन्स रीच, गेट टू। थ्राइव कहते हैं फरोग पाना, फलना फूलना। डू वेल, क्विक, इन ग्रोथ, प्रॉस्पर, फ्लोरिश। एम्बोस अभरवें, बैल बूटे बनाना। मेक पिक्चर्स ऑफ और ऑन इन रिलीफ। वेलेंशिया मशरकी स्पेन का एक सूबा है जी, अ प्रोविंस ऑफ ईस्ट स्पेन। प्रोवर्बियल मिसाली को कहते हैं, हेयर वेल नोन, लेजेंडरी एंड फेमस। एम्फी थिएटर स्टेडियम नुमा। सर्कुलर building with scats rising behind and above each other, round and central open space. Nautical जहाज रानी से मुतल्लिक, बहरी, of ships, seamen, naval, marine, sailing. Average जहाज चलाने वाले की मजदूरी वगैरह. Here it has been used in the sense of duty upon goods. अल अज़हर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक यूनिवर्सिटी को कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो इन इजिप्ट. एंडोवमेंट आई टोल्ड यू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर ICOM क्लास एंड यू हैव जस्ट रेड इट ऑल्सो. रकम या फंड को कहते हैं एक्ट ऑफ गिविंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूसिंग रेगुलर इनकम स्पेशली टू द ऑर्गेनाइजेशंस. मैग्नीट्यूड बहुत अहम चीज़ को कहते हैं. साइज डिग्री ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. मैनोस्क्रिप्ट्स होती हैं जी किताबें, मसूदे.
बुक्स रिटन बाय हैंड, नॉट प्रिंटेड, वॉल्यूम। अगानी है, दैट इज़ नॉट अफगानी, इट इज़ अगानी, मौसीकी पर लिखी गई एक किताब, अ बुक ऑन म्यूज़िक। रूडिमेंट्स, बुनियादी बातें, फर्स्ट स्टेप्स और stages in some branch of knowledge. So these were the English to Urdu meanings जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने का मकसद था। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। So these are the few short questions which are very important for your board exams. So let's discuss the answers of these questions. So the first question, give an account of the early career of Abdul अल-रहमान वन, जिसको अव्वल कहते हैं, हिज ड्रामेटिक एस्केप एंड हिज एडवेंचर्स इन अफ्रीका। आपने बताना है इसका अर्लियर करियर क्या था और ड्रामेटिक, ये जिस तरह से भागा था अफ्रीका से अपनी जान बचाकर, वो भी आपने बताना है। ऑन द अराइवल ऑफ द एनिमीज, अब्दुल अल-रहमान जम्प्ड इनटू द रिवर एंड स्वैम अक्रॉस द रिवर टू सेव हिज लाइफ। इन नॉर्थ अफ्रीका ही बेयरली एस्केप्ड असैसिनेशन, और नॉर्थ अफ्रीका में इसने बड़ी मुश्किल से, बेयरली बमुश्किल से, अपने आप का कत्ल होते हुए बचाया और फरार हो गया। 5 years लेटर ही रीच स्योटा, जगह का नाम है। हिज मैटरनल अंकल्स लिव्ड इन द नॉर्थ अफ्रीका, और नॉर्थ अफ्रीका में उसके मैटरनल अंकल्स रहते थे, जिनको मामूजाद कहते हैं, या वालदा की तरफ से जो भाई होते हैं उनको कहते हैं मैटरनल अंकल। दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, और उन्होंने उनको पनाह दी अब्दुल अल-रहमान को। क्वेश्चन 2, हाउ डिड अब्दुल अल-रहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासिड कैलिफ टू कॉन्टेस्ट हिज रूल। अब्दुल अल-रहमान ने किस तरह से गवर्नर को डील किया जब उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी? लेट्स hear it. Abdul Rahman killed the governor, cut his head and preserved in the salt and camphor. Abdul Rahman ने गवर्नर को कत्ल किया, इसका सर बदन से जुदा किया, उसे नमक और काफोर से महफूज किया, और उसको रैप्ड इन कर दिया ब्लैक फ्लैग में, काले झंडे में उसको लपेट दिया। एंड इन द लेटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ही सेंड इट टू द अब्बासिड कैलिफ एज ए गिफ्ट। उसने कहा मेरी अपॉइंटमेंट चाहते हो, ये लो, ये ख़त भी लो, और अपने जो गवर्नर है जो मुझे बुलाने आया था अपॉइंटमेंट के लिए, उसका सर भी लो। और किसको भेजा जी? अब्बासिड कैलिफ को। What did, question 3 है जी, what did Abbasid Caliph say on receiving the head of his governor? जब उनको हेड रिसीव हुआ Abbasid Caliph को, उन्होंने कहा जो शुक्र है लगा कि हमारे और इसके दरमियान दरिया है, वरना हम तो गए थे। He said thanks to be Allah for having placed the sea between us and such a foe. foe कहते हैं जी दुश्मन को। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। व्हाट डिड अब्दुल अल-रहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफाई हिज कैपिटल? अब्दुल अल-रहमान ने अपने आप को मजबूत और अपनी दारुल हुकूमत को खूबसूरत करने के लिए क्या क्या काम किए? टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन 4 का आंसर है जी, he developed a well-disciplined and highly trained army of 40,000 or more Berbers. उन्होंने अपने आप को ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए और वेल डिसिप्लिन आर्मी बनाने के लिए उन्होंने 40,000 बर्बर्स की तैयारी करवाई, और अपने दारुल हुकूमत को खूबसूरत और रीबिल्ड करना, एक्विडक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द प्योर वाटर टू द कैपिटल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ी दीवार बनाई अपनी दारुल हुकूमत में। ही बिल्ड पैलेस, उन्होंने पैलेस और एक गार्डन भी बनाया। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्जॉटिक प्लांट्स इन हिज प्लेस, गैर मुल्की पौधों को उन्होंने मुतारफ़ करवाया अपने मुल्क में, और अपने महल में उन्होंने इनको सजा कर रखवाया। क्वेश्चन 5 है जी, गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑल राउंड प्रोग्रेस मेड बाय द अरब्स अंडर द अब्दुल रहमान 3। अब्दुल रहमान सोम जब आए तो उन्होंने क्या प्रोग्रेस की वो भी देख लेते हैं। इन द रेन ऑफ अब्दुल रहमान सोम, जिसको 3 कहा जा रहा है, कर्डोवा बिकेम द मोस्ट कल्चर्ड सिटी ऑफ यूरोप। लेदर इंडस्ट्री मेड अ फ्लाइंग स्टार्ट देयर, वूल एंड सिल्क वर वुमेन देयर, ग्लास वेयर, ब्रास वर्क, मतलब बहुत सी तरक्कियाँ हुई जिनको मुख्तलिफ एग्जाम में बताया जा रहा है। एंड पोट्री वर इंट्रोड्यूस देयर, द आर्ट ऑफ इनलेइंग स्टील फ्लोरिश्ड देयर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। सबसे ज़्यादा ज़राअत और सनतकारी ने वहाँ पर तरक्की पाई। लास्ट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का, देख लेते हैं क्या कहता है। व्हाट डिड अल हक्काम डू टू प्रमोट? अब अब्दुल रहमान 3 के बाद अल हक्काम आते हैं। उन्होंने लर्निंग और स्कॉलरशिप्स अपनी सल्तनत के लिए क्या प्रमोशंस की, क्या तरक्की की?
27 फ्री स्कूल्स अपने दारुल हुकूमत में बनाए, मस्जिद को जो है इनलार्ज किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कर्डोवा बनाई। ही इनवाइटेड प्रोफेसर्स, उन्होंने जो है मशरिक से अपने प्रोफेसर्स को दावत दी। एलोकेटेड स्पेशल फंड्स, और उनके लिए रखा, ये फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पेरोवर्ड पढ़ा था। सैलरीज रखी उनके लिए, और 400,000 किताबें कर्डोवा की लाइब्रेरी में उन्होंने रख दी। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन आंसर्स, और अब बात करते हैं MCQs की, जिसके लिए हम कर रहे थे बहुत इंतज़ार। सो लेट्स टॉक एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम जो हैं शुरू करते हैं अपना पहला MCQ। द उमाय्यद डायनेस्टी इन Damascus was overthrown in 750. Rule Dynasty Decency Buildings। तो इसका है हुकूमत, rule। The accession of the Abbasids to the Caliphate was signalized by a ruthless extermination of every member of the defeated family. Put to the death, accession का मतलब बता रहा हूँ जी, accede to the throne, failure, hatred. So the correct answer is accede to the throne। आपका जो आंसर है उसको हम accede to the throne कहेंगे। The accession of the Abbasids to the Caliphate was signalized by a ruthless and extermination of every member of the defeated family। Extermination को क्या कहेंगे? Death, extremity, excommunication। Extermination को कहते हैं death, extremity, excommunication, exhaustion। exhaustion तो बिल्कुल भी नहीं इसका बनेगा, इसका भी आपका death बनेगा, the thing which is finished। Abdul Rahman had sharp equivalent features, equalized, eagle-eye, dull, unbalanced। So that will be eagle eye। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब्दुल रहमान वॉज अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ कहते हैं एक्सीलेंट, एक्सेप्टेंस, एक्सेसिव, एक्सेसिबल। तो हम कहेंगे शानदार, एक्सीलेंट। उसके बाद 6th MCQ की अगर हम बात करें तो अब्दुल रहमान वॉज मेड penniless when he started his journey, without shoes, without money, without companion, without pen। ये तो बहुत आसान है, जिसे हम कहते हैं without money। Now it is much clear। Last 3 MCQs। Abdul Rahman barely escaped assassination, hardly, without, bare, boringly, easily। बमुश्किल, तो ये भी बहुत आसान है, इसको आप कहेंगे hardly। Abdul Rahman barely escaped assassination, हमला, murder, possession, succession, accession। So the correct option is murder। Abdul Rahman was pursued by the spies of the new dynasty, killed, assisted, appreciated, followed। Pursued, its exact answer is followed। Last MCQs of exercise 1। In Ceuta, Abdul Rahman was offered refuge, shelter, rain, ministry, massacre। नहीं, इसका shelter होगा। So let's talk about the exercise 2, which is in front of your screen. Now it is clear, so let's discuss it। Abdul Rahman brought whole of Spain to subjection in a few years। Subjection कहते हैं अंडर कंट्रोल, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन या सजेशन। अंडर कंट्रोल को कहेंगे जी सब्जेक्शन। उसके बाद द एबसिड कैलिफ अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन अ कॉन्टेस्ट द रूल ऑफ अब्दुल रहमान। कॉन्सेंट, कंडेंसेट, अपोज, अप्रूव्ड। सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं मुकाबला, अपोज। Thanks be to Allah for having placed the sea between us and such a foe, was the caliph's fervent rejoinder। Foe, footman, fellow, enemy, fool। तो obviously दुश्मन को कहा जा रहा है तो enemy। Thanks
to Allah for having placed the sea between us and such a foe was the caliph's fervent rejoinder. Foolish, fervent का मतलब emotional, fond या false. Emotional है जी. Thanks to be to Allah for having placed the sea between us and such a foe was the caliph's fervent rejoinder. Rejoinder का मतलब है reply. Revenge, retreat, reply या retention. Abdullah Rahman discontinued the Friday sermon hitherto delivered in the name of Abbasid Caliph. Sermon, surname, address, holiday, festival. Khatab, address. Abdul Ar-Rahman's realm was consolidated, crucial, contended, concocted, stable. So the correct answer is B. Abdul Ar-Rahman realm was consolidated. Consolidated हो गया. अब जो इसकी अंडरलाइन वर्ड है उसको हम देख लेते हैं. किंगडम, रियलिटी, रियलाइजेशन, लीडरशिप. ये जी रिलीम है. रिलीम इसको कहते हैं किंगडम. यस, इसको हम कहेंगे किंगडम. Abdul Rahman imported exotic plants to his garden. Foreign, appetizing, tasty, causing pleasure. तो फॉरेन, गैर मुल्की, शायद अभी हमने पढ़ा भी है. मस्जिद ऑफ खरडोवा वॉज अ rival or to the two masajids of Islam in the Jerusalem and Mecca. Match, superior, junior, prior. तो rival वैसे हरीफ को कहते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन मैच है, मुकाबले का. अब्दुल रहमान ब्यूटिफाइड द cities of his domain. So domain means capital, districts, kingdom, province. It's kingdom. C. So exercise 3 is in front of your screen. Now let's discuss the exercise 3 की बात करते हैं. तो Spain received envoys from the monarchs of Germany, Italy and France. monarchs कहते हैं kings को. उसके बाद है जी कंट्री भी है, forefathers भी है और predecessors भी हैं. Spain yielded in magnificence only to Baghdad and Constantinople. Suburb, manufacturing, glory, magnitude. So the correct answer is glory, magnificence. Al-Zahra was partly excavated in and after 1910 repaired, embellished, decorated, dug. So the correct answer is dug. ये हमारे notes में भी था. With the help of his army, Abdullah Rahman kept treason and brigandage in check. Treason, disloyalty, appreciation, loyalty, devotion. Disloyalty इसका correct answer है. With the help of his army, Abdul Ar-Rahman kept treason and brigandage in check. Good deeds, politics, attack, treachery. So the correct answer is attack. Commerce and agriculture flourished in Spain. Discouraged, perished, decayed, developed. So the correct answer is developed. Flourished होता है बनना. The royal revenue of Spain was 602,45,000 dinars. Revenue, saving, expenditure, tax, income. Revenue कहते हैं income को जो आप बचाते हैं, बचा कर रखते हैं. The state of Spain was never so triumphant. Conquered, dominated, defeated, successful. So the 8th answer is also D. The third, Abdullah Rahman, like his illustrious predecessor, was a youth of intelligence and determination. Illustrious, critic, commentator, disreputed, famous. So the illustrious का मतलब होता है famous. The third, Abdullah Rahman, like his illustrious predecessor, was a youth of intelligence and determination. Predecessor कहते हैं ancestor, fellows, higher, successor. तो हम कहते हैं ancestors को.
So your third exercise is complete, and let's talk about the last exercise, that is the fourth exercise. Abdullah Rahman III conquered the lost areas and administrated them with sagacity. Sagacity का मतलब है आपका savageness, tyranny, wisdom and bravery. Wisdom आंसर है जी. The fruits were raised by a peasantry who worked the soil on shares with the owners. Peasantry, landlords, potters, slaves, farmers. So the correct answer is peasant से लफ्ज़ निकला है peasantry, जिसे किसान कहते हैं. The Garden of Spain was famous for its extensive shades and numerous cascades of water. Extensive, tiny, thin, small, wide. So the correct answer is extensive ka wide. The Garden of Spain was famous for its extensive shades and numerous cascades of water. Decoration, falls, aroma, phenomena. So the correct answer is falls, cascades. The International Nautical Vocabulary contains a few words which show the supremacy of the Arabs over the seas. Nautical. The correct answer is of sailing. Mistake. About deserts, concerning night. Yes, now it is clear. Abdullah Rahman III patronized learning, brought about, rejected, checked, spotted. Answer is spotted. Al-Hakam set aside the endowments for the salaries of teachers. Endowments. Chastisement, gift, tax, duty. That is the gift. Endowments. Kadoa housed a library of the first magnitude. Malfunction, deterioration, inferiority of the utmost importance. And it is the last D1, utmost importance. Dozy was a distinguished Dutch scholar, learner, ordinary, common, renowned. Distinguished को कहेंगे renowned. Spain made great progress when in Christiana Europe only the rudiments of learning were known. Rudiments: illiteracy, beginning, ignorance, unawareness. Beginning. Correct answer is beginning. Al-Hakam's agents ransacked the bookshops of the country. Ransacked. Deserted, burned, surged, bought. It's surged. In Spain, he initiated an intellectual movement. Spouted, bought, established, stopped. Banana, shuru karna, establish. So this was your last chapter of part 1, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़. उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी. हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद आपको वीडियोस मिलें. आजकल पेपर्स हैं, जिस भी क्लास के गेस्ट अवेलेबल्स हैं. अगर आपको किसी भी किस्म की इंटर या 9-10 की या किसी भी क्लास की ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प ईच क्लास. इट कैन बी ऑफ फेडरल एनी बोर्ड एंड इट कैन बी लाइक कैम्ब्रिज ऑल्सो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. और GS Academy यूट्यूब चैनल को दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़. Thank you for watching. GS Academy.